Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो में हम FA पार्ट 1 साइकोलॉजी पेपर के सॉल्व MCQs डिस्कस करेंगे और ये पेपर 2015 का है। तो सबसे पहले आपके लिए रिमाइंडर है कि चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। So the number one MCQ is the correct formula for determining IQ as used in Stanford Binet intelligence test was option A MA over CA, option B MA or DA multiplied by 100 and option C CA over MA multiplied by 100 and option D MA over CA multiplied by 100. The right option is option D MA over CA multiplied by 100, which means mental age over chronological age multiplied by 100. Number 2. Through which of its part the human eye focuses and transmits light to create an image of the environment? Option A lens, option B retina, option C cones and option D cornea. The right option is option D cornea. Number 3. A type of motivation that makes a person learn something or accomplish a goal in which no external tangible reward is involved is called option A. Curiosity, option B. Extrinsic motivation, option C. Secondary motivation and option D. Intrinsic motivation. The right option is option D. Intrinsic motivation. Number 4. In which of the following research technique a subject's behavior is studied in depth? Option A. Survey method, option B. Experimental method, option C. Case study method and option D. Statistical method. And the right option is option C. Case study method. Number 5. According to which theory of emotions, physiological changes create specific sensations and our brain interprets these sensations as different emotions? Option A. James-Lange theory of emotion, option B. Cannon-Barth theory of emotion, option C. Singer-Sactor theory of emotion, option D. Activation theory of motivation. And the right option is option A. James-Lange theory of emotion. Number 6. A woman is walking across the road. Suddenly she finds a car rushing towards her. Her heartbeat races and sweats break out as she jumps out of harm's way. This mobilization of energy is due to which of her system? Option A. Parasympathetic nervous system, option B. Sympathetic nervous system, option C. Limbic system and option D. Skeletal system. The right option is option B. Sympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों पार्ट्स हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो ओवरऑल इमरजेंसी सिचुएशन में वर्कआउट करते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करता है बॉडी से ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल किया जाए. नंबर 7. Which of the following motives are directly related to survival of organisms? Option A. Intrinsic motivation, option B. Primary motives, option C. Secondary motives and option D. Extrinsic motives. And the right option is option B. Primary motives. Primary motives में hunger thirst आता है जो overall biological needs होती हैं हमारी वो fulfill करते हैं. So हम कह सकते हैं कि primary motive survival के लिए ज़्यादा necessary है. Number 8. Which of the following options relate to the perceptual tendency of filling in the gaps in order to perceive disconnected parts as one whole object? Option A. Figure and ground, option B. Similarity, option C. Closure and option D. Continuity. And the right option is option C. Closure. Number 9. When the world is seen in three dimensions, which of the following process is involved? Option A. Illusions, option B. Movement perception, option C. Hallucination and option D. Depth perception. The right option is option D. Depth perception. Number 10. What is contained in the blind spot? Option A. Rods and cones,
Option B, no rods. Option C, no cones. And option D, no rods and cones. And the right option is option D, no rods and cones. Number 11. In which projective test of personality a person is required to write stories based on ambiguous pictures? Option A, Rorschach. Option B, TAT. Option C, ISB. And option D, CPI. The right option is option B, TAT. TAT stands for Thematic Apperception Test, जिसमें ambiguous pictures clients को दिखाई जाती हैं और उनको कहा जाता है कि एक स्टोरी जो है वो ड्रॉ की जाए। जो भी कैरेक्टर होता है उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्कस किया जाता है स्टोरी में और ओवरऑल आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो क्लाइंट स्टोरी लिख रहा है उसका क्या लिंक है, उस स्टोरी का क्या लिंक है उसकी पर्सनल लाइफ से। Number 12. The intelligence test, revised and modified by Lewis Terman in 1916, was originally introduced by option A. Jean Piaget, option B. Sigmund Freud, option C. Binet and Simon, and option D. Terman and Merrill. The right option is option C. Binet and Simon. बीने एंड साइमन का जो ओरिजिनल टेस्ट था उसको रिवाइज किया था टर्मन ने 1916 में, ताकि ओवरऑल उसके टेस्ट को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर सके। नंबर 13. द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच साउंड पासेस व्हेन इट एंटर्स द ईयर इज ऑप्शन ए ओवल विंडो, ईयर ड्रम, स्टेरेप, कॉक्लिया, ऑप्शन बी कॉक्लिया, स्टेरेप, ईयर ड्रम, ओवल विंडो, option C, stirrup, eardrum, oval window, cochlea, and option D, eardrum, stirrup, oval window, and cochlea. The right option is option D, eardrum, stirrup, oval window, and cochlea. Number 14. Which memory system provide a brief representation of the stimuli present at a particular moment? Option A, sensory register, option B, short-term memory, option C, primary memory, and option D, long-term memory. The right option is option A, sensory register. Number 15. Which part of brain is involved in the experience of emotions? Option A, hypothalamus, option B, cerebral cortex, option C, pituitary gland, and option D, reticular formation. The right option is option A, hypothalamus. Hypothalamus is the part of limbic system और limbic system जो है वो emotions में involve होता है. So the right option is option A. Number 16. Which of the following option represents the enduring dimensions of personality characteristics? कौन सा ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि हर पर्सनालिटी के अंदर सर्टेन डायमेंशंस होंगी? ऑप्शन ए मेंटल प्रोसेसेस, ऑप्शन बी पर्सनल आइडेंटिटीज, ऑप्शन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंड ऑप्शन डी मॉरल कैरेक्टर्स. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स. पर्सनालिटी ट्रेट्स ओवरऑल डिफरेंट डायमेंशंस में पर्सनालिटी को इनलाइन कर देती हैं और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हर पर्सन जो है वो डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, क्योंकि उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. Number 17. The WISC is a test used to measure option A, children's personality, option B, adults' intelligence, option C, adults' personality, and option D, children's intelligence. The right option is option D, children's intelligence. WISC stand for Wechsler Intelligence Scale for Children और इसमें 5 डोमेन्स को असेस किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, नंबर 2 पे है विजुअल स्पेशल, नंबर 3 पे है फ्लूइड रीजनिंग, नंबर 4 पे है वर्किंग मेमोरी और नंबर 5 पे है प्रोसेसिंग स्पीड. सो ओवरऑल इन डोमेन्स को असेस किया जाता है ताकि इंटेलिजेंस लेवल को असेस किया जाए. Number 18. Which of the following is the definition of learning? Option A, physiological arousal, option B, change in behavior, option C, maturation, and option D, development. The right option is option B, change in behavior.
लर्निंग की डेफिनेशन हमें यूजुअली वी गो थ्रू ऑल द डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, और ज़्यादातर जो कॉमन डेफिनेशन होती है वो relatively permanent change in behavior होता है. So change in behavior is known as learning. Number 19. According to Freud, which of the following is called the storehouse of psychic energy? Option A, ego. Option B, superego. Option C, dreams. And option D, it. The right option is option D, it. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ईगो, सुपर ईगो एंड इड ज़्यादा ही साइकिक एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन मोस्ट डोमिनेंटली जहाँ पे साइकिक एनर्जी स्टोर होती है वो इड में होती है. Number 20. If the previously learned material interferes with the recall of recently learned material, the phenomenon is known as option A, retroactive interference, option B, chunking, option C, proactive interference, and option D, tip of tongue. And the right option is option C, proactive interference. जब previously learned material आपको new material learn करने में हिंडर करती है या अफेक्ट करती है तो उसको proactive interference कहा जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.